दिन यूज नहीं होगा, आप सब्जेक्ट एक प्लस बार है। दोबारा बताएं। अक्सा कामरानी, एक बार दोबारा बताएं और सब गौर से सुने कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैम सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एनी सेंटेंस मैम एज एन जैसे कि एग्जांपल। यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टोर हैव बीन ओपनिंग अर्लियर देन यूजुअल दिस वीक। यहाँ पे हम लिखेंगे द स्टोर हैज ओपन अर्लियर देन यूजुअल दिस वीक। वेरी ग्रेट। ओके मैम यहाँ पे नाउ। हम जो बीन हटा देंगे और ओपनिंग की जगह पे ओपन लिखेंगे थर्ड फॉर्म। ओके, सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस बताना है ताकि वो टेल को रहने दे। बट आपने बस शॉर्ट शॉर्ट बताना है ताकि उसको एग्जाम्पल उसी सुमैया को। सुमैया, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? Subject plus have plus third form of verb plus object. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके नाउ, आंसर ताहिरा। आंसर ताहिरा। बोलते म्यूट करते होती है यहाँ से नहीं लगी। जी मैम। Okay, now you have to tell me the structure of future perfect continuous. जी मैम। सॉरी मैम, मैं जो मीटिंग से लीव हो गई थी, मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था। मैम Okay, तो इसमें आप सब्जेक्ट yes, yes, who was telling? सब्जेक्ट मैम प्लस मैं एक्स्ट्रा कमरा ये में बात कर रही हूँ। मैम मैं मीटिंग से लीव हो गई थी नेटवर्क के इशू की वजह से। Okay, okay. Aksa, I didn't call your name, I think. नो मैम, आपने मुझे बोला था ना स्ट्रक्चर पता है सब प्रेजेंट परफेक्ट अच्छा का, अच्छा अच्छा तो अच्छा, जी 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 जी, करेक्ट करने का बोला था, जी जी। ओके, यस इट्स ओके, मैम नाउ यू उसके हैव टू बाद। लिसन आंसर ताहिरा। तो जी ओके मैम। आंसर मैम। ताहिरा, जी मैम फ्यूचर आपने परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का पूछा ना। जी जी। मैम मैं आए मैम इसमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस ओके। वर्ब के साथ आईएनजी। हम्म। एनी एग्जाम्पल? मैम इसमें एग्जांपल मैम आप उर्दू बोल रही हैं, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। आप इसको करें। ये 9 सेंटेंस है। शी हैज बीन वॉकिंग। जी तो आपने फ्यूचर में बताना है, इसको ना करें, बस आप ये बता दें कि शी हैज बीन वॉकिंग सिंस 2 o'clock। मैंने इसको इसमें बताया, तो आपने शी हैज बीन वॉकिंग सिंस 2 o'clock, तो आपने इसको बस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। यस, जस्ट आपने विल लगाना था। ओके ओके, नाउ सनम सोलंकी। सनम, you have यस to मैम। tell me the sentence structure of present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस Yes. मींस डिड और डज और डू हेल्पिंग वर्ब और सिंगल सिंगल के साथ हम ई आई एस ऐड करते हैं सिंगल वर्ब के साथ। Aksa, is there something extra? मिस मिस मैं सनम मिस ने जो मैम फॉर्मूला हम बताया। मैम हम वर्ब यस के मैम साथ ई मैम आई एस इसको लगाते हैं जो है ना हम सिविल वर्ब अफर्मेटिव में में नहीं लगाते। सब्जेक्ट प्लस एस और एस बी वन यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट इसमें No, no, no. अफर्मेटिव में I डू didn't say. No, no. I said, does Sana tells right structure of present indefinite tense? नो मैम बिकॉज सना ने डू डज भी यूज किया है और एस और एस भी यूज मैम किया वो था। तो हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट के। No, she was telling the structure, but आप sentence अब बताएंगी सनम। And now जी जी मैम। give an example of sentence. शी राइट्स अ लेटर। Good. Okay. Hafiza Ikra, Yes, ma'am. you have to tell the past continuous tense. Structure of past Ma'am, continuous tense. ma'am, which sentence? Past मैम continuous tense. Past continuous tense structure. जी Ma'am, structure. okay. Subject plus helping verb, was verb plus ing plus object.
First form of verb with yes, ma'am. Okay. Who will tell that? मैम Mahnur आपकी आवाज Irsh नहीं आ रही. Mahnur Yes, Irshad. ma'am. So she tell correct structure of the sentence. Can I translate this? Yes. Hello. No, I said कि उसने जो स्ट्रक्चर बताया है क्या वो करेक्ट था? I didn't hear. Can you repeat Ma'am, again? Okay. can I speak again, ma'am? Yeah, Yes, yeah, yes, yeah. please. Okay, subject plus helping verb में हमारे पास was verb है plus first form of verb with ing plus object. She is right, ma'am. ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ. ये Yes, पहला ma'am. पहला फर्स्ट सेंटेंस है. Okay. निम्रा अब्दुल रहमान. निम्रा अब्दुल रहमान, आपने एक सेकंड में अपना माइक जो है वो ऑन करना है ताकि ये फटाफट बस सेंटेंस को आपने. हाउ आई विल सी देयर नेम. नू आत्मा. मोहम्मद रिजवान मुस्तफा. Yes, ma'am. He has been, I'm reading the first sentence, okay? He has been reading the newspaper since breakfast. So, uh, tell the tense of this sentence. Once again. ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका कौन से टेंस में है? ये वाला टेंस, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका टेंस बताना है. लाइक क्या ये प्रेजेंट Pre- इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट Present, है, पास्ट परफेक्ट है? present perfect Present continuous. tense. Yes. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. हाउ यू रिकॉग्नाइज? Has been reading. Has been and verb plus ing. पहला क्या है? Has been and verb plus ing. Fourth और form. And since morning. सो And since wait, ये होता है हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ गया और सिंस. ये हमारी yes. निशानी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ओके नाउ अतिया आसिफ. अतिया आसिफ आपने सेकंड का बताना है. टेंस बताएं. जुबिया. Ma'am, Yes, can I? simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस. आर यू श्योर? Yes, ma'am. Ma'am. ओके, हाउ यू रिकॉग्नाइज दैट? Because टेल in मी द simple साइन tense, ऑफ. I mean simple tense, the first form of basically it's a simple tense because there is no helping verb is used. It only first form of verb play and object and a subject. ओके, नाउ मेक इट पास्ट इंडेफिनिट into negative. Past indefinite but negative sentence. Ma'am, may I? Ma'am, Ma'am, may can you I? repeat? जुबिया, जुबिया आपने इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है बट इन नेगेटिव सेंटेंस. They didn't play football. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, हाशिर हमाद. Yes, ma'am. So you have to tell about third sentence. Okay, ma'am. They have been playing tennis for the last 2 hours. Uh, it's a present perfect continuous, ma'am. Yes, good. So how you recognize? Actually, have been is used and playing actually verb with ing and last was referring time. So
I said about present perfect continuous tense. वेरी गुड। ओके, इसकी वही हमने ये फर्स्ट सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, एंड दिस इज आल्सो अगेन ओके। तो इसका Yes, साइन ma'am. क्या हमने देखा, यहाँ पे हैज बीन था, यहाँ पे हैव बीन है, प्लेइंग एंड फोर, यहाँ पे सिंस था तो यहाँ पे फोर हो गया, बट दीज आर द साइन ऑफ Time, प्रेजेंट परफेक्ट referring to कंटिन्यूस। time. ओके, नाउ ये जिन्होंने नंबर लिखा हुआ है 8768940, हाउ कैन आई कॉल देयर नेम, हर नेम और हिज नेम, आई डोंट नो। मैम सना गुल है वो। सनागुल, सनागुल, आर यू हेयर? यस मैम, अस्सलाम यस, वालेकुम। सनागुल, वालेकुम अस्सलाम। सनागुल, जी। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट फोर्थ सेंटेंस। Store has been opening. This is also present independent present independent tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। No, Present ma'am. perfect continuous tense. यस, प्रेजेंट, Perfect Perfect. continuous tense. ओके। नूर फातिमा हिजाज, आई थिंक हमने कर दी है। जवेरिया राशिद, Yes, ma'am. फिफ्थ सेंटेंस। Ma'am, I have a question. यस, यस, Ma'am, ये जो है the store has been opening earlier than usual this week. मैम इसमें हमारे पास जो since और for का यूज नहीं हुआ है, तभी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं ना? यस, बिकॉज उन्होंने टाइम मेंशन किया है, दिस वीक, यूजुअल दिस वीक ना। Okay. टाइम मेंशन करें और बास टाइम वी कैन नॉट डिफाइन द टाइम, but has been and ing, this shows that this is a past perfect continuous tense, and if we have to mention the time, this can be also okay, but इस tense में फिर भी time mention है। Okay, ma'am. Thank you. सही. Yes, now you have to explain about fifth sentence। Ma'am, I'm unable to listen what you actually asked me. आपने इसका टेंस बताना है, फिफ्थ का। टेंस बताना है मीन्स किसी कन्वर्जन में करना है या क्या? ये जो सेंटेंस है, ये किस टेंस में है, लाइक फ्यूचर परफेक्ट है, Okay, पास्ट okay, परफेक्ट okay, है? okay, okay, okay. I was thinking that maybe I have to tell in Urdu. Okay. Yes, it is the fifth sentence. It is in um, present indefinite. यस, इट इज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, गुड। ओके, और स्टूडेंट हमारी जो एक्टिविटी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, मैं जिसका नेम लेती जाऊंगी, आपने गुलनाज, सिक्स सेंटेंस। गुलनाज, बुशरा, May I? Yes, ma'am. I'm Bushra. This is present perfect tense, sixth number. She has walked because the third form of verb is used, and this shows that this sentence is present perfect tense. And वेरी subject गुड, has, वेरी गुड। have used, and then object. Thank you, ma'am. नूरुल हुदा, Playing. शमसुन निसा, Yes, ma'am. शमसुन निसा, Present सेवन। continuous tense. They are playing tennis in the park. वेरी गुड, वेरी गुड। लाइबा, एट सेंटेंस। May I? लाइबा, यू हैव टू टेल एट सेंटेंस। मैम मैं बताऊं? यस, मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जी मैम। गुड। ठीक है, ये सिंस से पहले तक प्रेजेंट परफेक्ट है, ओके। जी मैम। ओके, नाउ रजिया अहमद,
Madam, it's Razia. Razia, sorry. Yes. Ninth sentence. Ninth sentence. It's present perfect. Very No, good. No, ma'am. नहीं no, मैम ma'am. आपने She सॉरी has सॉरी been. Present perfect एक्चुअली continuous है. आई टेल अबाउट 8 सॉरी मैंने आपको Continuous. 8 वाले का बता दिया मैंने First आपको 8 form वाले with का बता ing. दिया He has been walking. Yes, इट्स continuous. Perfect प्रेजेंट continuous. परफेक्ट कॉन्ट जी मेरी मिस्टेक मैंने आपको 8 वाले का बता दिया Okay, okay. It's okay. Aisha? Aisha, you have to tell about ninth, 10th sentence. Aisha, Yes, ma'am. now you have to tell about 10th sentence. जल्दी जल्दी बस आपने बताना है, फटाफट से हम टेंसेस चेंज करते जाएंगे फिर. May I? Ma'am, may Yes, I? yes, yes, please. नेक्स्ट सेंटेंस Present, करते सिंपल जाओ. प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस present indefinite tense. इंडेफिनिट टेंस Simple present Yes, tense. opens. Okay, now who has raised their hand? May I? और yes, आप 11th करें. This is present perfect. Okay, Alishba, Ijaz. Excuse me, I am Riazilai Nawaz. Just Yes, ma'am. इस 12th सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस पूछना चाह 11th के बारे में ये एवरी डे का मेंशन है इसमें द स्टोर हैज ओपन ऑन टाइम एवरी डे दिस मंथ तो वो तो डेली का है इसमें परफेक्ट टेंस कहलाएगा डेली है Yes, इसमें देखिए ये है उनका टाइम जो है ना, दिस मंथ. इस महीने में हर रोज जो स्टोर है वो टाइम पे ओपन हुआ इस महीने में. जी सो जी दिस इज द साइन. सो यू हैव टू दिस, वो मंथ के बारे में बात कर रहा है. तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में भी कहा जा सकता है द स्टोर ओपनड ऑन टाइम एवरी डे दिस मंथ हैज की जरूरत नहीं है ना हो तो भी सेम मीनिंग आएगा Yes, द you can, स्टोर yeah, ओपनड you can say in both. Yes, of course you can say in both sentences. You can जी also say in that sentence. यस ओके थैंक यू Urva. एक्सक्यूज मी मैम Yes. इन्होंने कहा है कि ये हम हैज के बगैर भी लगा सकते हैं हैज के बगैर मतलब कह सकते हैं हम जैसे कि ये पास्ट बन जाएगा इंडेफिनिट टेंस लेकिन अगर हैज साथ लगाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा ऐसे ही है ना तो फिर इनमें डिफरेंस जी तो जी, हुआ ना बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, लेकिन हम अपनी बात को कन्वे उस सेंटेंस में भी कर सकते हैं क्योंकि हम बात पास ही कर रहे हैं ना. वो उनका सवाल, बिल्कुल वो कहना ये चाह रहे थे कि हम इस सेंटेंस को इनडेफिनेट में भी कर सकते हैं. तो बिल्कुल इस कर सूरत में हम कर सकते हैं क्योंकि हम पास्ट में, बट ये जो सेंटेंस है दिस इज परफेक्ट. बट वो कह रहे थे कि इनडेफिनेट में भी हो सकता है, बट लाइक वी कैन से दिस सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. यस Okay, now I will give you a one word. Okay, now you have to explain that word. The how you will explain, for example, if I will give you a star, so you can say that a star have five sides and it is a golden star, it shines. I got star award. किसी तरह से भी अपने ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है in your own words. Okay, are you ready? So सादिया नाज, सादिया नाज, आप इमीडिएट बेसिस पे ना अपना माइक ओपन कर लिया करें बस. और Ma'am. सादिया, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट टेबल. डिफाइन अ टेबल इन 6 to 7 सेंटेंस. it is
Bhaktavar, you have to count their name who will play this activity. So now we will strictly mark them. टेबल के बारे में बताना मैम। जी जी, आपने आपने मुझसे टेबल कुछ का बोला बताना कि मैम सरिश आपने मुझसे कुछ बोला है? जी बख्तावर, अब जो ये एक्टिविटी होगी ना, इन पे अब स्ट्रिक्टली मार्क्स, जो मार्क्स इनको दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ यू ओके हैव टू मैम। काउंट दैट हु इज प्लेइंग देयर, हु इज परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटी। ओके मैम। ओके, Srinas, you have to define a table, describe a table, or you can say something about the table. If you have कुछ भी है, बस आपने शुरू हो जाना है। इस एक्टिविटी की पहली चीज ये होगी कि मैं नेम लूंगी और माइक ओपन हो जाए, ठीक है। और एवरीवन शुड सिट एक्टिवली। जो 2-3 सेकंड तक नहीं आएगा, या 5 सेकंड चलो कर लेते हैं, देन बताओ। हम और दूसरे को लेंगे, ठीक है। टेबल स्टार्ट कर देंगे। Ma'am, can I explain about it? There is made up of table is made up of word. कंटिन्यू They have कंटिन्यू, गुड four. साथिया। They have four legs. They have, how many tables are you explaining? It is and it's Okay, okay, good. Continue. it have four corner. It is used for material. Okay, good. Sadia Naz, stop. Mahnur Sheikh. Mahnur Ma'am, Sheikh, may I? Ma'am, may I? मैम may I say something? अब सिर्फ एक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। देयर इज नो टाइम टू आंसर। बस आई जस्ट वांट टू कॉल एवरीवन एंड यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन योर एक्टिविटी। द क्वेश्चंस विल बी इन ग्रुप नाउ, क्योंकि फिर टाइम क्वेश्चंस में चला जाता है तो कुछ बच्चे रह जाते हैं। जिसका जो जो क्वेश्चन होगा वो आप ग्रुप में कर लीजिएगा, ठीक है। बट आई फॉरगेट हुज नेम, आई Mahnur Sheikh. Yes. Mahnur. Okay, you have to explain apple. Step what? Hello. Yes. What is this, ma'am? ये एक्टिविटी ऐसी है कि मैं आपको एक वर्ड, सबको मैं बता रही हूँ। एवरीवन यू हैव टू लिसन दैट यू हैव टू डिस्क्राइब अ वर्ड। यू हैव टू डिस्क्राइब अ वर्ड वट एवर आई विल प्रोवाइड यू। आपने उसको डिस्क्राइब करना है और उसी टाइम स्टार्ट हो जाना है, उसी टाइम व्हेन आई विल नहीं, राइट। पास्ट में डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, आप मेंशन करेंगे No, कि इस no. टेंस में करना There is no any restriction to use any specific sentence. You have to just explain that word. Ma'am, I didn't Now, है। understand. Mahnur, तो आप बाद में कर लीजिएगा। ओके, नूर फातिमा Ma'am, इजाज। can I explain about apple? I could not. Whenever somebody will say, ask you, tell your name. I could not, see No, the I'm Bushra Banaras. I want to who tell is. about apple. I'm Bushra No. Banaras. Bushra Banaras, you have to The tell apple about. is No, no, not apple. Not apple. You have to tell about weather. weather. Yes. Okay, ma'am. The weather forecast predict rain today, and dark clouds are gathering in the sky, and temperature is expected to drop tonight. A breeze is blowing through the trees. The sun was shining brightly yesterday morning. Weather conditions can change quickly and unexpectedly. Accurate weather forecast help us plan our daily activities. मैम आप इनको मार्किंग आप देंगी या मैं देती जाऊँ? आप देती जाए। आप देखिए कि एक तो टाइमिंग का भी देखें कि कितना टाइम लगा रही है बोलने में ना।
पता है कितना स्पीडली यस, लगा रही है और कितना टाइमली रिस्पॉन्स कर रही है उसके अकॉर्डिंग। टाइमली रिस्पॉन्स। और जो बच्चा नहीं बोलेगा उसकी दोबारा फिर वो नहीं करेंगे फिर ये सानिया अख्तर, सानिया अख्तर, सानिया अख्तर। Yes, ma'am. Is I am audible? ओके नाउ, यस, सन। Sun is a natural universe which is made up of which is used mostly lightning our Earth. We can catch heat and light from sun. It also हेलो। माइक ही बंद कर ली। ओके, मैम मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही यस, है आपकी आवाज। So sun is usually mm, a ball of fire. It shines in the sky, or it also gives us light. It makes us earth warm and maintain temperature. It rises from the east, sets in the west. And ma'am, I think गुड, completed. गुड, इट इज इनफ। मुबीना दिलशाद। अस्सलाम वालेकुम। मुबीना, यस मैम। वालेकुम सलाम। बुक। Book. Okay. I love reading books. I read book daily. I read thrice daily, 2 pages each time, and I'm out of words. Sorry, ma'am. व्हाट इज योर, ओके, आई विल टेल यू। अगर मैं उर्दू में बता रही हूँ इसलिए कि सबको समझ आ जाए, ओके। जब हम कोई ऑब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं, नाउ यू विल नॉट एक्सप्लेन बुक, आपको एक अदर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, आपने देखना है उसकी जी। काफी सारे एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन वी कैन एक्सप्लेन अबाउट साइज, कि कितना कितने, ओके, ई बुक का तो साइज नहीं बता सकते, कलर बता सकते हैं, फेवरेट बता सकते हैं। और अब अगर मैं होती तो मैं कहती कि मेरी फेवरेट बुक ये है, मैं उसको 3 बार पढ़ चुकी हूँ, उसका कलर ये है, उसके पेजेस ये हैं। हमने, ये आपकी क्रिएटिविटी शो कर रहा है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है, ओके। आई ऑलवेज फोकस ऑन थिंकिंग प्रोसेस, कि आपको इमीडिएट बेसिस पे एक टास्क दिया जाता है और आप उसको कैसे सुनते हैं, तो उसको फिर प्रोसेस में कैसे लाते हो, ओके। तो अगर जैसे टेबल का उसने बहुत अच्छा बनाया, उसने एकदम से उसकी लेग बता दी, वुड से बताया, कलर बताया, उसका यूज बताया, उसका उसमें कोई हैबिट है, आप इस तरह से कुछ चीजें बताएंगे, ठीक है। तो उसी की चीजों में से बताना है कि ये किस लिए इस्तेमाल हो सकती है, या उसे अपने से लिंक कर ले, फ्रेंड से लिंक कर, कुछ भी बोल दे। नाउ, राजिया अहमद। Yes, ma'am. बॉल। Okay. Ball is made up of usually ball is made up of rubber, and we play with it. Ball is widely used in the cricket field. Cricket is my favorite. Cricket is my favorite sports. So there are many famous bowler in Pakistan who play international, like Haris Rauf and Shaheen Shafridi, and uh, with the ball we play many games. Um, um, and when I was a child, गुड, I गुड, okay, ओके, दैट इज गुड। okay, okay. मरियम अब्बास, मरियम अब्बास, लैपटॉप। Laptop. Laptop is an amazing tool for to study because it connect us with the world. It provide us internet facility, and it's connect people's far away and far distance and make the world global. So internet has multiple use, but I use laptop mainly for my study purposes, for online purposes, and to make work easier. It
make my work smaller, and I do my work easily with the laptop within a within manageable time. Good. Okay. Amara, Zainab. Yes, ma'am. Classroom. Yes, ma'am. Classroom. Classroom. Classroom is the place where we study, and the classroom has different things like benches, chairs, and students sit there and take knowledge and from their teacher. And in classroom, we can also see blackboard or whiteboard, and that's it. Okay. Okay. Good. Aksa Kamrani. Yes, ma'am. Library. 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 Ma'am, library is a place where we get knowledge. And libraries, there are so many books like novels, books, and the library where we can read easily and peacefully without any disturbing. The library where we perform work easily and beneficially because we have so many books, general knowledge, and in library there are everything is present like books, novels, internet. Good. Hafiz Ikra. Hafiza Ikra. Fan. Yes, ma'am. Fan. Yes, ma'am. Pen. Pen is a thing which we use for uh, pen is made up of metals, and we used fans in the warm condition, and a fan is an electrical device used for circulating air to provide ventilation or cooling, and it typically consists of blades or a motor and a frame and a control mechanism, and it operates by converting electrical energy into mechanical energy to rotate its blades and move air, and fan consume less electricity compared to the air conditioner, making them cost Good. effective. Good, Ikra. And Good. Sumaya. Yes, ma'am. Letter. Letter. Let we write letter to to I'm sorry, ma'am. Letter is we write letter on the page to give information about us. It everywhere we can send the letter and tell our loved ones, close one, that how are we, and any information that we want to deliver, we can give them. Okay, good. Hafiza Ikra. yes, ma'am. Okay. मेरा हो क्या? Now you have Can to I? tell a word जिसको सना गुल एक्सप्लेन करेंगी। इमीडिएट बेसिस पे एक वर्ड बताएं। मैम क्या समझ में नहीं आया? आप एक आपने वर्ड कोई बताएं जिसको स्टूडेंट डिस्क्राइब करेंगे। सना गुल, चले सना गुल कैट करते हैं। सना गुल, ये नंबर वाला नाम आई थिंक सना गुल ही है। यस जी मैम। मैम। कैट। ओके विच मैम, वन? मैं डिस्क्राइब करूँ? यस, सना गुल एक्सप्लेन करें। Which word? Cat. Cat? No, now you have no cat. हम क्या रहा है? No. Okay, who is Urva Right. Afzal? Who speak? Tell your name. Urva Afzal. Urva, you have to speak about a girl. Okay. Girl, she's a girl. She likes to play cricket. You are also a She, girl. yes, ma'am. I am a girl. I like pink color. I love to play cricket.
I am doing speaking activity now. I love to speak English and I am trying to speak English. Okay, there are two students who are also listening. So, what's your name? Iman. Iman. Iman, you have also explained about. You can tell us about cat. A cat is a domestic animal. Uh, You can help her. Cat is a domestic animal. Uh, You have a cat. Its color is white. कुछ भी. I have a cat in my home. Its color is white. Its color is white and Okay, good. Nimra Abdul Abbas Rahman, sorry, Nimra Abdul Rahman. मैम राजिक है आप राजिक Razik, यस मैम मैम आप हमेशा मेरा नेम गलत लेती हैं फिर मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ sorry, actually, okay, Razik. You can see on the screen, like there is only R. So that's why I could not read the complete. अच्छा हाँ यहाँ पे है okay Razik. Ikra, Nimra Abdul Razik, you have to explain about cartoon. कार्टून okay okay a cartoon is a type of animation often humorous or exaggerated. Cartoon can be found in a newspaper. I like Cartoon Network and cartoon feature with exaggerated feature in action, allowing storytelling and humor. And animated cartoons, in particular, have become a important part of our global environment. And, Okay, I love cartoon movies. And my favorite cartoon is Masha and the Bear. good. Hafza Ikra, why you have raised your hand? You have done your activity. Hafiza Ikra has also raised. Okay, answer Tahira. Answer Tahira. जी मैम. You have to tell about glass. जी मैम. मैम किसी भी डांस में एक्सप्लेन कर दो. Yes. मैम this is a Okay, glass. your word will be changed. You have taken 5 seconds. So now you have to explain about river. Okay मैम. Don't take time. Don't take time. Your word will be Okay again मैम. changed. This is a river. It's Hashir Hamad. Yes, ma'am. You have to explain about river. River is usually a larger flowing water body, more than it has more volume than a stream, and in Pakistan rivers flow from north to south. Pakistan has 5 big rivers, and one of them is Indus River. One of them. Okay, river में fish होती है, river में water होता है, किस तरह का होता है? You can explain. Okay, to whom I have given the word river before Hashir? Ma'am, answer Tahira. And Tahira, जी मैम. you have to explain about fish. Don't take time.
सर अपना माइक तो आप वो करें ना म्यूट। जी सॉरी मैम। मैम प्लीज वर्ड चेंज कर दे। Okay, you have to explain about चेयर which word? Chair. चेयर Yes. This is a chair. It's made of wooden. It's a wooden chair. It's used for sitting. It's used in classroom and offices. It's used in examination hall. That's all. Okay, good. Gulnaz. Gulnaz. यस मैम आवाज नहीं आ रही। अब आई है. Okay, now you have to tell about boy. Boy is a male young आई थिंक मैम दूसरा कोई वर्ड चेंज करके दे। हेलो इसी पे ही Okay, please, करें आप कंटिन्यू। you can wait. Amar, Zainab. Amara Zainab, you have to explain about boy. You have like brother. You can see that my brother is. I like you can tell us something about brother that he is a boy. हमारा जाने का फिक्स है, उन्होंने कर लिया एक्टिविटी। Amara, you have done okay. Then I will change the word. Mm, bot. मैम ये वॉइस में से है मोहम्मद हसन उल्लाह, उनका कर ले, वो कब से उनका हैंड रेज है। Okay, okay. Then please, Hassan. Hassan. मोहम्मद Ma'am, हसन। I'm Ehsan. So did you say Ehsan or Hassan? Okay, okay. Sorry. Ehsan, you can explain about the word boy. Boy. Okay. So the boys are the good people. Boys work together and they like to share their daily routine with each other. And the boy has incredible. Sorry, the 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 boy ran across the park to catch the ball, and a little boy was playing with a toy car in the sand, and the mostly boy loves riding the bikes, and every boy in the class wanted to join the football team. Is it enough, ma'am? Or I? Very good, very good. A boy can explain about boy. So why she don't explain? Okay, who was the previous girl? मैम फेवरेट मोहम्मद मैम गुलनाज थी जो नहीं कर पाई, इनको चेयर Okay, एक्टिविटी। ओके नेक्स्ट विल बी निम्रा निम्रा Kiran, शेख। Kiran Ashif. Okay, Kiran, Yes. ma'am, you have to explain about home. Home. Home is a place where people get very comfortable and they have their memories there. Home is a place where people create their life journey along with their children, and they can have special rooms for each person, like for girls, for boys, and everybody can have a study room in a home. And home is a place where we can gather our family
and and enjoy each and every moment. And home is a place where we can say we nourish our children, and home and Very good, very good. Good. Is there anyone who has not performed not performed activity? Excuse me, Because ma'am. I can. Miss, I am not performed. Uh, Ma'am, you I also don't perform actually. Riaz, okay? Okay. Riaz Ilahi Nawaz. Riyaz, Bakhtiar also didn't perform. okay, okay. Now you have to. Okay, I could not read the name, so that's why. Riyaz, ये महविश बख्तावर यूसुफ जाई. जी मैम. Um, um, who will give word? I am confused because some students are not like, wo. So Mehwish, you have to, mobile. Okay Tell something ma'am. about mobile. Mob- my mobile. Okay ma'am. Mobile is actually used for social media for and it helps to provide us news about all over the world. And if there is any problem regarding knowledge or any question about some topics, then it can help us and we can search on Google, AI, etc. to find about that topic. And through mobile, we can connect to our relatives. Good, For very good. example, Nurul if Huda. I'm Good. here and okay, ma'am. Okay, very good, very good. Nurul Huda. Yes, ma'am. Nurul Huda. You have to explain about health. Health. Yes. You can explain about importance or how to keep, care of your health. To Health which is a kind of state of health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of diseases or infirmity. And it also includes preventing care such as regular medical checkup and vaccination to catch and prevent potential issue early. And a healthy lifestyle improve quality of life, increase energy levels, and reduce the risk of chronic diseases, enabling individuals to live more fulfilling lives. very good, very good. Riaz, talk to me. Riaz. Yes, ma'am. Yes, Riaz, you have to tell something about a doctor. That why doctor always just prescribe medicine and is it good? कुछ भी ये तो मैं एक example जी. देती but you have to explain in your word, okay? In your own word. A Doctor. doctor is a noble profession, and every doctor we one have to get it MBBS for qualifying a doctor, and doctors are serving the nations. They are providing health facilities. They are they are doing a lot of humanity, and they are almost every doctor has their own patients, and hospitals are made for the the doctors give almost 24-hour services. Doctors do the duty on hospitals as well as in at home also. The doctors are Ma'am. the neighbors. Good. Okay, Virka. बस कुछ students हैं, I think. Excuse me, ma'am. Yes. Actually, I had an emergency, so I think I need to leave. I am sorry for the inconvenience caused, so I had to leave. No, it's okay. I will join Yeah, tomorrow, inshallah. Inshallah, inshallah.
Thank you. Okay, answer Tahira. जी मैम. Ma'am, can I continue on the doctor, as you said that why doctor always suggests the medicine, either they are beneficial or not. Yes, you can. Okay. Yes, yes, please. So, I'm Tisha Ahuja. I'm a physiotherapist. So I would like to say that whenever patient go to the doctors, they always suggest the medicines, but there are a lot of the side effects of the medicines. But when you choose the physiotherapist, it will they will treat the patient without the medicine and without the side effects, but usually patient do not follow the instructions of the physiotherapist because they are used to the medicines, which is a easy way for them. They just take the medicine and just rest. But when they go to the physiotherapist and they suggest them some exercise, they will pretend like it's a big task for them. But trust me, the physiotherapy is not that like exercise can heal and rehabilitate the patient without the side effects. That's all from my side. Thank you. Very good, and it is good. So I'm also in this, idea, because if we will, the doctors should encourage the patients that they should, do activities which are like movable. For example, we just all sit all the day. I'm like online worker, so I just sit all the day in front of laptop, sometime all the night. So that also affecting my health. that that's the work of the physiotherapist. They suggest that there should be a minimum 4 to 5 minutes mini break in the office work. Just like you said, you are always sitting on a chair and using the laptop. This will leads to the bad posture and back backache issues and cervical issues. Most of the patients come Very with good, that. very good. I Yes, will ma'am. implement this idea after every hour, because that is good point. Okay, Yes, ma'am. Tafsha, you have to tell. Tafsha, Yes, ma'am, it's Tashfa. Tashfa. Okay, sorry, Tashfa. Tashfa. Tashfa, Yes, ma'am. tell me something about yourself. Tashfa. Myself. Okay. Uh, yes, ma'am. Myself, Tashfa Cheryl, and I belongs to Karachi. And I am doing a BS in biotechnology. It's my last year. I have two siblings, and I love reading book. And now I am taking my English class, and I am doing an activity. Thank you, ma'am. Good. Nimra Sheikh, Yes, ma'am. I think you have did your activity. No, ma'am. Okay, now you have to tell something about, uh, you know, anyone can suggest any word. Ma'am, water. 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 Okay, no. Water is a universal thing. This is very Education. beneficial. This is Education. education. Education is very important for everyone. This is the way of life that we can live. Education is the key of success. This is very important for every person. They teach us the way of living, way of work, and Good, good. Uh, Javeria, Yes, ma'am. okay, you have to tell something about um, Preach. city life. Father. City, Ma'am, only city. Yeah, city life. You can say something about. okay. I live in city. That name is Karachi. And city is a area where modernization occur as compared to rural area. City has modern malls and everything, and they have a well defined roads.
And city also have a great education system as compared to urban area, and city contain very good educational system. And what can say more? Good, Javeria. Good. Okay. Okay, Alishba Ijaz, tell something about Yes, family. ma'am. Family. Family. Family is a very good factor for us because when we have a family, we can live the life happily and very supportively. The word family refers to the group of people related to the by blood, marriage, or by the adoptions who share a common bond and often live together or maintain close relationships. In a broader sense, a family can also a social unit that provides emotional support, care, and sense of belongings to its members. In Pakistani culture, family is highly valued. As I'm a Pakistani, so I have a family like this that's considered the essential part of one's life. It consists of the parents, children, and the grandparents, sibling also. Sometimes extended relatives can, like aunts and uncles, can live, and many cousins live with us. Okay, ma'am. Thank you. Good, good. Can I Sarah speak? Asim. Who spoke? I could not read the name. Sophia, ma'am. Sobia. Sobia, tell something about friend. Friend. Friend is basically best part of our life. Good friends are very helpful and cooperative, and they help in every field of our life. Uh, if we Good friends are always their loves are always, and uh, good friends always keep us in our difficult times. They help us in they help us in every fields of life, and they helps us in our education or other activities, and we love to spend time with our friends. Good. Virka. Okay, Sarah Alim. Sarah Asim. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. Tell something about tree. um the tree is very huge, and it is made up of wood. It takes a lot of time for a tree to grow so large. Tree provides us shadow, and also paper is also made from tree wood. Thank you, ma'am. Good. Nimra Shah. Nimra Shah, you have to explain about Nimra. Ma'am, I think Nimra, last are one you is. okay? Nimra Alam. Yes, ma'am. Okay, Nimra Alam, you have to tell something about English. In English, Miss tell ma'am, tell me what can how can I speak English? Give him some in like sentence like आपने sorry. इंग्लिश के बारे में बताना है कि इंग्लिश के बारे में कुछ बताना है कि इज इट इम्पोर्टेंट व्हाई वी आर हियर कुछ भी लाइक जो आपके माइंड में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश वी कैन से English is very important of us because nowadays in our world, country, English is more used. Without English, there is nothing. In other countries, English is everything. English. This ma'am, I ओके सनम गुड निम्रा आलम नाउ सनम you have to explain something about Yes, um, ma'am. uh, any word just any Father. word ma'am, ma'am, Father can I में. leave the class because there is a lot of guests in our yes yes home. he's last Yes, member so ma'am. anyone want to leave okay father somebody said Uh, that you have to explain about father I tell my father. My father is very good and supportive. Father always helps us in study, and our father sacrifice for our education, for our future.
and father are very protective. They give us a He. protection from he He. give us protection from enemies, and father works for their children for to their future. Thank you, ma'am. Very good. Very good. Okay. Answer Tahira. Excuse me, ma'am. Yes. Yes. जी Ma'am. मैम Answer Tahira. You have. Okay. I will listen you. I think there was Tisha. Answer. You have Yes, tell ma'am. something about whiteboard. white was made of wooden. It's used in classroom for writing to teach students. Whiteboard. Sorry, ma'am. Okay. Something about glass pen. Mm, pen is used for writing. I have a pen. मेरे पास पेन है वो I इसका किस have a कलर pen. का है I वो use प्लास्टिक का pen है वो for. कितने का खरीदा है there are multiple sentences so Okay, ma'am. I have a okay pen. class I use it for writing my subjects. I purchase from the shop and its use are okay multi-purpose. Ma'am, sorry, good आपसे एक question करना है. no, I was saying that Yeah. good now Tisha okay we मैम should end the class yes मैम शमसुन्निसा Sorry, ma'am, मेरा इनके mic mute था. शम्स निसा जी इन्होंने मैम नहीं मेरा तो अभी तक कोई टास्क नहीं हुआ जिसमें मार्किंग हुई हो actually I think you didn't raise your hand so that's why I could not recognize but you can explain about poor like the word poor the word poor mean it could be any poor person poor village, poor home. Okay, if it okay is I can if it, I yes ma'am I can speak in different perspective like mobile phones have changed the way we live but not okay everyone okay, can afford then them select poor people anyone. often yes Anyway, so mobiles yes ma'am I'm talking about the poor the state poor the poor people often struggle to buy a mobile phone or they pay for internet services. They are not affording for them without a phone. It is harder for them to find the jobs in current scenario and they can't access important informations. They can't be stayed and connected to other peoples as their friends, their office colleagues, and many children from poor families miss online classes because they do not have smartphones. Even when they have their own phones, the cost of charging or the cost of buying or purchasing the data internet access is too much for them, and this shows how poverty creates barriers in using technology. And helping poor people to access their mobile phone is the good thing we can do for them. very good, very good. Okay, Thank you नहीं ma'am. आज कंट्रीब्यूट किया हुआ फातिमा बतूल Fatma Batul. Hmm. Fatma, you want to tell? यस मैम Okay, now tell some any word. Anyone could tell some any word. Anyone can tell any word to Fatma. Grandparents. Pillow. Grandparents. Door. Pillow. Ma'am, lamp. Pillow. Door. Pillow. Grandfather. Select anyone and start explaining that. फातिमा बतूल पिल्लो को करूं Okay. पिल्लो Don't take time. You have to just explain pillows immediately. okay ma'am pillows basically refer to the soft cushion used to support a head and other parts of body while lying down we use pillow during sleep
and it is a typically filled with a soft material like feathers or cotton, foam, fibers, which provide comfort and commonly placed on bed, sofas, if we use cushion word and we use on sofa, and pillows mostly used on bed, and it has various sizes, small, large, um, and we use for sometime for decorate our room, uh, um, for the beautiful using the beautiful colors of pillows, and it's enough, ma'am. Yes, yes, it is enough. Good. Anyone who didn't perform this activity? Should we end the class? If Yes, all ma'am. have okay, मैम okay. आई वांटेड टू आस्क मेरी एक्टिविटी हो गई या फिर आप कोई वर्ड देंगी? आपकी अभी नहीं हुई? मैम मैंने फिजियोथेरेपी पे डिस्कस किया, बट आप देना चाहें तो आई विल। बेस्ट हाँ आपकी हो गई है, बट दैट वाज गुड पॉइंट। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैं वो आपसे एक क्वेश्चन करना था कि आपने जो सर ने एक एक्टिविटी साइन की थी, तो उसमें एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस था कि बच्चे रात तक खेल रहे होंगे। मैम पूछना इसमें ये है कि द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग, इसमें सिंस आएगा या टिल आएगा? टिल आएगा, टिल। रात तक खेल रहे थे ना, जी मैम, रात तक। लेकिन Yes, ma'am. Till. टिल आ मैम गया। फ्यूचर की बात है, टिल आएगी। काम कर रहे हैं ना प्रेजेंट। ओके, टिल आ फ्यूचर की गया बात बिकॉज रात आएगा। तक है ना, उसके वर्ड को समझना है कि रात तक, जी मैम। so you can use, okay, and I until will again see the sentence, then I will tell you. I think कि till ही यूज होता है वैसे, अगर हम कहते हैं कि बच्चे रात तक खेल रहे थे, जी यही सेंटेंस था मेरे ख्याल में। ठीक है, मैं तो बाकी देख के खेल, बच्चे में बता जी मैम, बच्चे रात तक खेल रहे होंगे। Night. बच्चे खेल रहे होंगे। जी जी। Ma'am, its children will have been playing till night. यस, इसमें ये मैम तो द हो चिल्ड्रन विल हैव बीन गया। प्लेइंग टिल नाइट आएगा ना, तो मतलब यस अगर यस, टेंस के हिसाब से हम देखें तो सिंस यूज करना था ना कि रात तक बिल्कुल उनके बिल्कुल, अगर वो खेल रहे। फ्यूचर है तो यस, इन फ्यूचर वी हैव टू यूज टिल बिकॉज जो वो सीन्स होता है कि वो तब तक, बट अभी तो हम टिल की बात करें ना, हो गए होंगे, जी जी। खेल रहे होंगे, वो टिल यूज करना है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। Ma'am, यस यस will we get certificate at the end of this session? यस यस, यू विल गेट, all the students will get Okay, ma'am. सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। Yes, ma'am. Take care. अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। मैम। एक्सक्यूज मी मैम, बख्तावर। यस